Hi students, how are you? I hope you all are good. Students, in your previous sessions, we have already completed the input unit and output unit of computer system. I already told you that from computer organization and architecture point of view, the entire computer system is classified into some units, and that unit is input unit, output unit, central processing unit, that's popularly known as CPU, and memory unit. We have already covered your input unit, central processing unit, and output unit. Today point of discussion is your memory unit. So here students, look at this picture again. This is CPU, central processing unit, and here one unit is that is known as CU, control unit, and this is ALU, arithmetic and logic unit. Okay. Now here is your input unit. Input unit, draw করছি। This is input unit, and this one is the output unit. This is output unit. And now here I draw the memory unit. This is memory unit. This is MU, or you can say SU, storage unit. MU or SU. It is known as memory unit or storage unit. It is further classified into two sections. One is PM, primary memory, and another is SM, secondary memory. Secondary memory. Control unit controls all unit controls and coordinates all the units. Okay. This line indicates the flow of control, and here I give the dotted line. Dotted line will indicate the flow of data. The input unit data से memory unit to data is control unit, then control unit forward करछि data to ALU, then ALU forward करियो memory unit, further memory unit to ଯିବ output unit. Clear? Good example those. This line indicates the flow of control. And this dotted line indicates the flow of data. It indicates flow of data. Student, suppose I insert this kind of data and instruction to the computer system, and I inserted this data into the computer system by the help of input unit, that is the keyboard, and this data immediately goes
into the computer system and stores temporarily in CPU's register. Registers also one type of memory. Registers is one type of memory. That memory is used for temporary basis. पर आम आलोचना करवा तो जितेबाला when data comes into the computer, the data stores in a specific space, specific memory space, and that data stores temporarily. And after the completion of the processing by the CPU, the result comes to your memory further, and as per the instruction of the control unit, that result goes to the output unit for display purpose. कथा कौन कहूँ जिते आम डाटा कौन से दौरान मेमोरी कंप्यूटर भितर डाटा आम देले थ्रो द इनपुट यूनिट एंड दैट डाटा स्टोर्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द टेम्पररी बेसिस किसी समय आम रही से डाटा 2 and 3 देले विथ इंस्ट्रक्शन 2 and 3 इज द डाटा एंड दिस प्लस इज द ऑपरेटर फॉर द एडिशन पर्पज एंड दिस इज नोन एज द इंस्ट्रक्शन. I already told you that any information has two parts, one is instruction part, one is data part. Any instruction has two part, one is instruction part. सेटा आउथरम कहूँ आवश्यक अच्छे. Any information is classified into two parts, one is instruction part, instruction, and one is data. Clear? The instruction and data with the difference at all. Instruction specifies what to do and how to do. Instruction specifies what to do and how to do, but a data means the work is performed, the work is done on which information or work is done with some information, and that information is known as the data. For example, 120 and 130. This is the data, and with the data, computer cannot do anything. Computer waits, computer expects some instruction from the user sides, and after getting the instruction, computer starts the job. There is no instructions. मुझे पचारूची एटी रिजल्ट केते आसियो तो जनरली आम कहते 250 बट 250 इज रंग यहाँ मुझे आगु कही कहीं ना देयर इज नो इंस्ट्रक्शंस मुझे एडिशन कि सब्सट्रैक्शन कि मल्टीप्लिकेशन कि डिविजन कौन सी इंस्ट्रक्शन मुझे मेंशन करी नहीं. देयर इज नो इंस्ट्रक्शंस ओनली द डाटा 120 and 130 and using the only data computer cannot do anything. The computer expects some kind of instructions from the user sides. When I give the instructions that the plus, it means that I request to the computer to perform the addition operations taking 120 and 30. Then answer will be 250. It's okay. Here information is divided into two parts, instruction and data parts. That instruction and the data part भितर आम देखुं तेणु आम जो कौन से डाटा आम दौरान जेकोसी इनफर्मेशन आम इनपुट यूनिट देले दैट इनफर्मेशन गोज टू योर मेमोरी सेक्शंस एंड दैट इनफर्मेशन दुई पार्ट रोचे गोटे ये इंस्ट्रक्शंस आम गोटे रोचे गोटे ऑपरेशन पार्ट गोटे एड्रेस पार्ट. वन इज ऑपरेशन पार्ट अनदर इज एड्रेस पार्ट. The information is divided into two sections. One is instruction, another is data. Further, instruction is classified into two parts. One is the operation part and one is address part. Okay. Now, the information comes from the input unit and it stores in a place, reserved space, which is known as the memory, and that it stores that information for the temporary basis. And control unit has that data from this memory unit and checks whether the data is mathematical or not. If data is mathematical, then control units forwards the data to the ALU,
and ALU performs the mathematical operations. After the completion of its operation, ALU forwards the result to the memory unit, and as per the command from the control unit, as per the instruction from the control unit, this result goes to the output unit. So today our point of discussion is this memory unit. तो आमे मेमोरी यूनिट विषय पढ़ा. व्हाट इज मेमोरी? क्लियर? एटी मेमोरी इज इट यू कैन से द मेमोरी रिफर्स ए फिजिकल डिवाइस which is dedicated to store some data, whether temporarily or permanently. It means that memory is also known as semiconductor memory, because that memory is made up of some kind of metal oxide. It is known as the metal oxide semiconductor. The metal oxide semiconductor memory, which is integrated on some silicon chips, and this physical device is responsible to store some information for the temporary basis or permanent basis, is known as the memory. Students, the memory means what? Memory is a metal oxide semiconductor device which is used to store the data, whether temporarily or permanently. Here questions arise: why you store the data? What is the necessity of the memory? Why you need the memory in the computer system? Students, assume that you have the brain, but that brain is not capable to remember something. Student, you have the brain, very fantastic brain you have, good thinking power you have, but the problem is that you cannot remember any information for longer time. गजनी फिल्म देखती हो ना, गजनी फिल्म रो जो अवस्था है आमिर खान को सही अवस्था पड़े. तो मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर समथिंग, एंड दैट इज यूजफुल when in future you want to fetch that kind of information from the memory, setebale si help karibo. Memory is a place, memory is a metal oxide semiconductor device je ki kon se data ko store kari rakhuchi. And why we store the data? We store the data for the future use. In future, when we need such type of data, then we can track that data from the memory. So memory keeps the track of information. So without memory, computer cannot store anything. For storing purpose, there must be a container. For the storing purpose, there must be a container. That container of information is known as the memory. Understood? Computer performs the job. Computer fetches the data from the user by the help of input unit, and computer do the operation, or computer does the operation with the help of central processing unit, that the processor performs the job. After the completion of the processing, CPU or machine provides the desired result to the user through the output unit. That's all. So where the role of the memory? In this kind of data flow, in this kind of job flow, ये जो flow होची, जो processing होची, at that time each and every moment computer needs the data from somewhere. कौन सी जगह किसी डाटा स्टोर करिया रखुची, कोठी डाटा आणुची. जेतल क्वेश्चन तुम पचारछु व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेते बेले जद टेम्पररी तुम ब्रेन ले जाई कोठी जाई स्टोर हे करला सर क्वेश्चन कोन पचारले. टेम्पररी बेसिस रे हम डाटा स्टोर करी रखुचंदी, सेतल स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर, दैट इज नोन एज द रजिस्टर. एंड परमानेंटली स्टोर करी जत आमे रखुचंती फॉर द लॉन्गर पर्पस, सेते बेले आमे गोटे मेमोरी सेक्शन रे हम प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विषय आलोचना करछंती.
The primary memory generally is with the computer. It means that when you buy the computer from the market, the primary memory comes along with that. The primary memory is the inbuilt memory of the computer, you can say, just the main memory. And a primary memory has a limited space. It is not sufficient to store the huge amount of data as far as you need. That's why to extend the size of the memory, to expand the size of the memory, we need the extra memory, and that extra memory is known as the secondary memory, which is not inbuilt. Clear? We fix that extra memory into the computer system to expand the size of the memory system. That is the secondary memory. The memory, entire memory unit or storage unit is divided into two parts. One is main memory, that's the primary memory. Another is the secondary memory, that is the auxiliary memory, or you can say external memory or extendable memory, whatever you can say. The primary memory is the inbuilt memory and it is known as the main memory. Primary memory has the limitation. It means that there is limited space where we cannot store the data as per our requirement. That's why to expand the size of the memory for our to meet our demands, there must be a large scale of memory, large size of memory. That's why to expand the size, we need the extra memory from the market, that is known as the secondary memory. Clear? Primary memory and secondary memory. Etu data im dasio further secondary memory is there. It is cyclic way. Secondary memory or primary memory vitre cyclic way data. The student memory आम डिवाइड कला दुई पार्ट रे मेमोरी आम रजिस्टर नौते दैट्स द रजिस्टर एट सीपीयू रजिस्टर देन स्टोरेज memory unit CPU रे ही हमें register पाइबा. Register is one type of special kind of memory which resides at CPU, and generally registers are used to store the data temporarily. And memory unit को हमें divide करछंती. गोटे हला primary memory, another kind is secondary memory. Primary memory is known as the main memory. Main memory. And secondary memory is known as the auxiliary memory. Auxiliary memory. Secondary memory is the auxiliary memory. Primary memory with हम पाइबा ROM, PROM, EPROM, and the EPROM is further divided into two types: UV-PROM, UV-EPROM, EPROM and double EPROM. Okay. The primary memory is inbuilt memory of the computer system, and primary memory is divided into some kind of memory, that's the ROM, PROM, EPROM. EPROM is further divided into two types: UV-EPROM and EEPROM. Another kind is RAM भी डिवाइड हो दु प्रकार गोटे स्टैटिक RAM
अरे डायनामिक RAM, DRAM, डायनामिक RAM, क्लियर। तो आज क्वेश्चन पचार प्राइमरी मेमोरी। तो व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ROM एंड RAM आम जा डिफरेंस करवा प्रॉम कौन EEPROM कौन ता विषय जाना कि बेसिकली ROM एंड RAM भितर डिफरेंस कौन। स्टूडेंट्स ROM stands for read only memory. As its name you can understand we can perform only one operation on that data which are stored in ROM. The ROM is one type of memory which is dedicated to store some data, and nature of that data is not volatile. Nature of that data is not changeable. That's why you can perform only the one operation, that the read operation on such kind of data. That's the difference, read operation and write operation. In read operation we can access the data from the computer systems. We cannot, we don't have any type of privilege to do any type of changes on the existing data which are inside the ROM. And a write operation, what is the write operation? Write operation allows us to do some changes. It means that getting the write operation you are privileged to do any type of editing on this data. Editing, jeta ame edit korchan kon korchan. You can insert the new data into the memory. You can modify the existing data inside the memory, or you can remove the unnecessary data from the memory. So write operations allows three operations are the insert operation, update operation and delete operation. But ROM doesn't allow this kind of write operation. Only ROM allows us to perform the read operations. Read operations only we can access, we can fetch the data. At the students gote situation bhavo jetale me gote bohi padhuchanti, at the time of reading a page, is it possible to change the content of the page? At the time of reading a page, is it possible to change the content of the page? The page ro jaha content ache taku ame change kari parchon at the time of reading, but at the time of writing we can change the content of the page. Here this ROM allows not changeable data. It means that ROM is not volatile in nature, means data inside the ROM is not frequently changeable, and the ROM retains its information as long as power is on or off. It doesn't bother about it. But a RAM retains its content as long as power is on, power supply is on. Jete poryanto power supply, till the power supply thibo, jete poryanto power supply thibo, RAM bhitre data hi thibo. Jetale power supply off hochi, se data erase hi jauchi. The data is not available at the time of when power supply is off. But RAM is different. That's why RAM is volatile in nature. The data inside the RAM is changeable, but the data inside the ROM is not changeable. Clear? So ROM and RAM भितर को आमे डिफरेंशिएट करूँ मु एबे.
ROM, one kind, then another kind is RAM. Students, RAM stands for random access memory. Why its name is RAM? Why its name is random access memory? What do you mean by the random access memory? आमे एठी कहले रीड ओनली मेमोरी, ये राइट ऑपरेशन अलाउ कर नहीं, तो एठी तो आमे कहि पारता रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी. बट व्हाई द नेम इज लाइक दिस random access memory? Student, one thing, look at the memories is divided into some cells that are known as the memory cell. When you intersect the row and column, the intersection point of row and column give you a cell. The intersection point of row and column give you cell. Focus on this point. This is intersection of this column and this row. Clear? And this is a cell. And in memory, we can say this is the memory cell. Clear? In case of random access memory, तुम्हें यार भी गोटे एड्रेस थो मेमोरी सेल कौन से गोटे एड्रेस अच्छी ये भी डिफरेंट एड्रेस अच्छी एड्रेस इज रिटन इन 0 and 1 0 1 एड्रेस रिटन थी मु तुम कहीदेली इंस्ट्रक्शन हैज द टू पार्ट, वन इज द ऑपरेशन पार्ट एंड अनदर इज एड्रेस पार्ट. जीवा तो मेमोरी सेल प्रत्येक मेमोरी सेल गोटे गोटे एड्रेस रोज सब एड्रेस मल्टीपल मेमोरी सेल अच्छे. रैंडम एक्सेस मेमोरी गोटे फैसिलिटीज अच्छी एठी आम गोटे नुआ फीचर्स एठी दउसी. यू कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम एनी मेमोरी सेल in a same time, or it means that fetching by accessing data or fetching data from this cell, but the time taken to fetch the data from this cell and the time taken to fetching the data from this cell is same. तुम यही सेल डाटा फैच कर बा यही सेल डाटा फैच कर ये दुईटा जाक डाटा जो आम रीड कर डाटा आम आक्सेस कर फैचिंग टाइम इज सेम. दैट्स व्हाई in same time you can access the data randomly from this memory. That's why its name is random access memory. जेकोसी सेल randomly तमे डाटा access करि परियो but fetching time is same. That's why name is random access memory. And a random access memory allows to perform both read and write operation. Clear? ये RAM and RAM भीतर difference होउस. तो RAM रे आम पाउछ देठी RAM is non volatile and RAM is volatile. Non volatile and volatile. Non volatile means it is not changeable and volatile means it is changeable. एठी RAM retains data आम कही परिवा data inside RAM is permanent. But RAM retains data, retains its content as long as power supply is on. Power supply is on. RAM retains its content as long as power supply is on. RAM doesn't allow write operation.
it only allow the read operation. Read operation. But in case of RAM, RAM allows both read and write operation. Write operation. Okay. This is the basic difference between ROM and RAM. ROM रे हमें basically CPU to create the speed sensitive cache in CPU cache ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି यूज କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ये एठी यूज कर पारुଛନ୍ତି हम फार्मवेयर ପାଇଁ। फार्मवेयर कॉन्सेप्ट रे हमें RAM यूज करଛନ୍ତି। क्लियर? ये तो डिफरेंस रहउछि ROM एंड RAM भीतर। तापर हम जिबा PROM कहले कोन बुझे? ROM is read only memory. Only memory. It calls ROM is read only memory and it doesn't allow us to perform any write operations. Write operations means आम ता भीतर कौन करथुवा डाटा इंसर्ट करथुवा डाटा रिमूव करथुवा किंबा मॉडिफाई किछ करथुवा चेंज किछ करथुवा बट ROM एक्चुअली अलाउ करे नहीं ROM only allows the read only memory means it only allow the read operations. You cannot do any type of changes. But PROM is known as programmable read only memory. Programmable ROM. PROM is one type of memory which allows the programmer to write some program. एक क्षेत्र कौन it doesn't allow any type of write operation. But PROM is one type of ROM. It allows the user to do the write operation only once. In this memory, programmer can store some data or programmer can do program only once. That's why it is known as programmable memory. And another is EEPROM. That is erasable programmable memory ROM. EEPROM is the erasable programmable ROM. एटी देख आउ थर करुच्ची ROM गोटे मेमोरी जो जगह किसी डाटा थाए से डाटा को आम चेंज कर कौन से राइट ऑपरेशन आम कर बट PROM आमको गोटे थर अलाउ करुच्ची प्रोग्रामर को जे ये भली जो ROM अच्छी से आम प्रोग्राम कर किसी प्रोग्राम लिखिपर आमको इरेज करने अलाउ करूना PROM. But EEPROM, that the erasable programmable ROM allows us to erase the program which are stored inside the ROM. By ROM भितरे जो डाटा गुड़ी को अच्छी ताकू इरेज करिया पाई ताकू डिलीट करिया पाई ये EEPROM अलाउ करछ. And this can be possible. This can be happened by two ways. One is UV EEPROM. It is known as
ultra violent erasable programmable read only memory. What is ultra violent UV, ultra violent erasable programmable read only memory? Means ultra violent ray pass करिकी से मेमोरी भीतर को ultra violent ray पास करिकी से रॉम को आमे इरेज करि परिबा. बट इन केस ऑफ double EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory. This is ultra violent लिखी EEPROM, ultra violent EEPROM यार फुल फॉर्म लिख दी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम. तो अल्ट्रा भायोलेंट रे पास करा ये मेमोरी भीतर को ताहले जाके इरेज होची. एठी होची इलेक्ट्रिकल इरेज बाय इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेड नो इलेक्ट्रिकली EEPROM. हाई इलेक्ट्रिक पल्सेस पास करिकी या भीतर को आमे डाटा इरेज करि परिबा. तो प्रथम है कौन से राइट ऑपरेशन हो पारिबनी. द्वितीय कौन राइट ऑपरेशन अलाउ अच्छी केवल थरी. तृतीय थर कौन आम एक इरेज करा एवं केपरी इरेज करा अल्ट्रा भायोलेंट एयर इलेक्ट्रिक पल्सेस पास कर. दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी. Now focus on RAM. RAM stands for random access memory. RAM is divided into two types. One is SRAM, another is DRAM. One is static RAM, another is dynamic RAM. RAM कौन कौन? Now RAM allows us to access the data from the memory randomly. Means accessing time from any cell, memory cell from the RAM is same. The static RAM and the dynamic RAM differentiate कौन करूची? Now SRAM stands for static RAM. स्टैटिक RAM. एठी हला लिख दोछि रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी. Random access memory. And this random access memory is divided into SRAM, static RAM, बुझोछि एटा static RAM, and DRAM stands for dynamic RAM. Dynamic RAM. Clear? In या पर फोकस करिबा. In case of static RAM, flip-flop concept is used to develop such kind of memory. Flip-flop तमे जानि छुआ जो एंड गेट नॉर गेट सब पढ़ी दिबो तुम फिजिक्स रे. हाँ तो ये 0 1 देले ये कौन आसतु मन पड़े ना गोटे धर लॉजिक आम लॉजिकटा बोलले कही पिला गदरे धर पी कंजक्शन क्यू नेले आम कौन दे 0 0 आम दूसरे कौन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. आम ट्रू फॉल्स ट्रू 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 पाई आम नौ 0 ताने फॉल्स पाई नहीं जाउछन 1. ट्रू पाई आम गोटे 1 नेले आम 0 ताने फॉल्स पाई आम 1 नेले ताले ए जगह रिटर्न कौन आसीबो. एटा जदि कंजक्शन थाए एंड गेट थाए एटा सब गेट कहउछन एंड गेट थाए ताले आम कौन कहउछन ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स. तो 0 1 आम कौन दौचे एठी जदि आम अल्टरनेट पाइले एठी धर आम 0 पाइले एठी 1 पाइले आम कौन पाउछन एठी 0 पाइ जाउछन. तो केतले आम ट्रू पाइबे जदि दीटा को 0 हो गला
दुईटा को 0 हेल्ले 0 पाँच कि आम दुईटा को 1 दे दूँ ताल आम कौन पाइले ये दुईटा को आम दुईटा को 0 दे दूसरी ताल आम 0 पाई जदि आम ट्रू आम नेले 0 ट्रू जदि 0 नेले ताल आम ये 1 1 1 पाइले जदि ये फल्स नौ 0 0 नेले 0 0 नेले आम 0 पाँच जब अल्टरनेट होती आम फल्स पाँच जदि आम 1 रखिले ये पाइबा भी 0 अदरवाइज ये जब 0 रखिए 1 रखुच्च भी पाइबा 0 ताले ट्रू 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 फल्स 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 ट्रू फल्स 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 मु पिला को ए बाबद कही आगु जानी थे कौन हाँ सारे गोटे यूज करती देख यहाँ ट्रू यहाँ टी भाया लगुना यहाँ टी हाँ टी स्टैंड टी ताक यूज ताक 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 अपोजिट कौन धीन ताक धीना धीन धीन ताक धीन 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 तो ये कंजक्शन आम मन रखू ट्रू 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 ताक 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 धीना धीन धीन ताक धीन 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 ये तुम जो लॉजिक गेट गुड़िकर यूज करूँ तुम फिजिक्स पिला ही बेटर बुझीपार ये कथा हाँ तो द फ्लिप फ्लॉप कॉन्सेप्ट इज यूज टू क्रिएट सच काइंड ऑफ एस राम स्टैटिक राम आम कौन कर फ्लिप फ्लॉप कॉन्सेप्ट यूज कर अच्छा छुआ या पूर्व आउ केतटा कथा मु कहवा चाहूँगी किछटा टर्म गोटे है बीट आउ है बाइट एगुड़ा जान तापर आम मेमोरी कथा जा मेमोरी कहले कौन बुझुचे तो मेमोरी इज वन टाइप ऑफ ऑलरेडी वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास मु कहली मेमोरी इज ए फिजिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन whether temporarily or permanently and that physical device is made up of some kind of metal oxides and that's why it is known as the semiconductor memory or metal oxide semiconductor memory MOS बोली कहते MOS metal oxide semiconductor ता कौन कहते metal oxide semiconductor लिखिए semiconductor तो this metal oxide semiconductor memory आम कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी कहले कौन बुझे द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी डिफाइन्स द हाउ मच बीट आम जनरली कौन कहते जे मेमोरी कहले कौन बुझे केते डाटा ता भीतर रोचे बट फ्रॉम कंप्यूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय हाउ मेनी which number of beats can be stored inside the memory बीट कहले कौन बुझे बाइनरी डिजिट बीट कहले कौन बुझे बाइनरी डिजिट दैट इज बीट BI बाइनरी डिजिट लास्ट टी यूज कर बाइनरी डिजिट मीन्स 0 1 0 is a bit and 1 is also a bit ताल बीट कहले कौन बुझाए बीट मीन्स 0 और 1 जो आम 1 बीट कहते कहते 1 बीट मीन्स 0 हो पारे और 1 हो पारे बुझे ताले बीट तार कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय हाउ मच बीट्स कैन बी स्टोर्ड इनसाइड दैट मेमोरी एंड बीट मीन्स 0 और 1 तो व्हाट इज बाइट ये टर्म गुड़िक आम यूज करवा मेमोरी आम कहते MB देखो तो केते स्पीड अच्छी इंटरनेट स्पीड केते अच्छी 100 MB 100 मेगाबाइट्स बर्तमान मेमोरी केते अच्छी GB आम कौन कहते 4 GB गोटे पेन ड्राइव आम जो आनुँच आम कौन 32 GB 8 GB ये वर्ड गुड यूज कर नहीं तो GB गिगाबाइट यहाँ कौन कहते गिगाबाइट तो देखा मुझे तो बाइट टर्म आम यूज कर तेणु बीट कहले कौन बुझाए बीट कहले 0 और 1 एंड बाइट कहले वेरी कॉमनली बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बीट तो 8 बीट्स को आम कहते गोटे बाइट तो 1 बाइट कंसिस्ट माने जनरली कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 8 बीट्स 8टी 0 कि 1 को लेकिन जो आम दूसरे ये लिखते 1 0 1 0 0 0 1 0 केतला देले 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ को आम गोटे बाइट कहीपर
बा आम ये लिखा 0 1 1 1 0 0 1 1 ये भी गोटे बाइट हो पारे। तो बाइट कहले कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो ये आम केतरा टर्म यूज करवा गोटे आम यूज करथिबा ना केबी। केबी कहले कौन बुझे किलो बाइट किलो बाइट। तो केबी कहले आम किलो बाइट बुझाए आ सेटा 1 केबी इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट। 1 केबी इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट। 2 to the power 10 बाइट कहले 1024 बिट। 2 to the power 10 के 1024 बिट। आउ गोटे आम यूज कर 1 MB दैट इज MB मेगाबाइट megabyte MB and 1 MB equal to 2 to the power 10 KB 2 to the power 10 KB equal to केते रोचे 1048576 बिट 1 2 3 4 5 ओके। तेन 1 MB आम MB कहते मेगाबाइट तेन 1 MB इक्वल टू 2 to the power 10 KB 2 to the power 10 KB कहले आम कौन बोलते जे 10,48,576 बिट्स। आउ गोटे टर्म यूज करथिबा जीबी। जीबी कहले कौन करते ना गीगाबाइट एगुड़ा सब क्वेश्चन आसी पारे एक बार के। तो 1 GB इक्वल टू 2 to the power 10 MB 2 to the power 10 MB केते आसी 1073741824 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 ओके। देखो सो जब आम किलो कथा आम से टर्म कहीं किलो बाइट दिगला जो किले कथा कहते किलो से आम 1000 को 1000 को ही इंडिकेट कर तेणु देख 1000 एटा नियरली इक्वाल बा से पाखापाखि रोचे 1000 पाखापाखि रोचे कोटा 1024 बिट्स तेणु 1024 बिट्स इज इक्वाल टू दे आम पाखापाखि कौन नौ 1000 बोली कनसीडर कर तेणु जेहेतु 1000 को कनसीडर कले टर्म ये देले किलो तेणु तार ना है केबी। जो मेगाबाइट कथा कहते से 1 मिलियन कथा हम चिंता कर 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs। ये देख ये पाखापाखि 10 lakhs रोचे 10 lakhs 48,576 बिट्स तेना 10 lakhs जो 1 मिलियन को ही रिफर करुच्ची से या ना रहा 1 MB दैट इज 2 to the power 10 KB इक्वल टू 10,48,576 बिट्स। गीगाबाइट जो कहते से 1 बिलियन कथा आम आलोचना कर 1 बिलियन की रिफर कर 1 बिलियन कहले 100 करोड़ को बुझाऊँ। देख ये 100 करोड़ ये 107 करोड़ 35,41,41,824 बिट्स तेणु या ना अच्छे गीगाबिट्स बुझे ना नहीं। तेना किलो जो कहते 1000 को बुझेले 1024 बिट्स से किलो बाइट कहले जो मेगाबाइट कहते से आम 1 मेगाबाइट कहले 1 मिलियन को बुझाऊँ दैट्स 10 lakhs ये 10,48,576 कला। गीगाबाइट जो कहते से 1 बिलियन को रिफर कर 1 बिलियन जो कहते 100 करोड़ को बुझाऊँ ये लिखाई 107 करोड़ 37,48,824 बिट्स से या ना गुड़िक ये रही। दिस इज द यूनिट ऑफ मेमोरी दिस इज यूनिट ऑफ मेमोरी डिफरेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। तेणु आम फोकस थिला कोठी एसराम आउ डीराम ऊपर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास को आसले आम जो स्टैटिक रैम आउ डायनामिक रैम विषय पढ़ा। ओके थैंक यू।